and listeners, welcome to yet another live stream of Allrounder 10. It was supposed to be on for me, जो आज का मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का स्पेसिफिकली फॉर मी उसामा का कुछ पाकिस्तानी नेशन का इन जनरल बहुत कुछ but it didn't went really good at all क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने at the end single handedly like officially बंदा कह सकता है कि one handed match it was one sided affair 5 विकेट से ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है and officially and finally they are on the points table with 2 points ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दो दो पॉइंट हो चुके हैं एंड श्रीलंका नीदरलैंड्स एंड बांग्लादेश आर श्रीलंका एंड नीदरलैंड्स आर येट टू गो ऑफ द मार्क आज हम करने लगे हैं रिव्यू इसी मैच का इन पर्टिकुलर आई हैव बीन जॉइंड बाय माय फ्रेंड एंड प्रेटी मच द लीडिंग फेस ऑफ ऑलराउंडर्स 10 उसामा कैसे हो क्या हाल है मैं ठीक हूँ यार। अहमद तुम सुनाओ क्या हालात हैं यार। श्रीलंकन बॉयज तुम्हारे जीते नहीं। अहमद यार बस क्या क्या कह मैं एक मिनट अहमद इससे पहले तुम रैंट करो। मैं तुम्हें जो है ना सोलो व्यू देना चाहता हूँ। हाँ कम ऑन अहमद। हाँ मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका की हार के बाद अहमद का इंटरनेट क्रैश कर गया। बहुत उम्मीदें थी इसको श्रीलंका से। He had high hopes for Sri Lanka. He thought Sri Lanka would win today's match. Ahmed thought Sri Lanka was going to win against Australia, was already fighting for survival in the tournament. And Ahmed is back, sort of like Sri Lanka, his internet sometimes up, sometimes down. Line spoken for Pakistan cricket team, but I think it fits really well for his internet as well. I think you're back now, and I'll give you the solo view here so that you can tell us more about your experiences regarding supporting Sri Lanka today. यार देखो आज मैंने एक तरह से अपना जो यूनिफॉर्म बनाया हुआ दैट इज यूनिफॉर्म विद श्रीलंका ब्लू है उनकी किट भी ब्लू है बट आई मीन आई वाज फॉर हैप्पीली सपोर्टिंग देम और मुझे कुछ फील भी थी कंसीडरिंग ऑस्ट्रेलिया के जो मैच चल रहे थे उनकी जो फॉर्म चल रही थी इट वाजंट रियली गुड एट ऑल उनकी कुछ तरफ से नेगेटिव स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन उनका तो खैर डाउट्स थे ही थे their mentality, their fielding, like जो हमेशा दो चीजें उनके साथ हमेशा गारंटीड की जाती है, they were like completely off the charts. But आज वो दो चीजें उन्होंने दोबारा शो की. एक कॉम्बिनेशन पे अभी भी बात हो सकता है, still doubt over the combination. But अभी हमने पोल भी किया हुआ है लाइव चैट में viewers if you are catching us right now. Or if you will catch that live stream later, live stream में एक poll चल रहा है that is are Australia finally back to their full groove? Yes or no? For me, जैसे मैंने बोला mentality wise उन्होंने अच्छे साइंस दिखाए हैं, fielding wise बहुत अच्छे साइंस दिखाए हैं. So not fully, but they are getting back to their best. So उसामा स्टार्ट ऑफ करते हैं लाइक लाइनअप चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ने कोई नहीं की थी वी वेंट लाइव बिफोर द मैच एज वेल यू वर आफ्टर लाइक व्यू कि ऑस्ट्रेलिया सिंगल हैंडेडली ये मैच जीता लाइक यू वर लाइक 70-30 इज इट फेयर टू से यू वर गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया राइट Yeah, sure. सो वही बात 70-30 जाने लगे थे तो उस समय मैच शुरू होता है लाइक आई वेंट ऑफ टू सिटी फॉर 1.5 आवर बट उस टाइम सीन ये था कि श्रीलंका के कोई 90 पे 0 आउट है राइट राउंड अबाउट उससे थोड़ा आगे जाके आपने ट्वीट भी की थी विद यू सर्टिंग योर फेस मैंने वो ट्वीट देखी थी देन आई हैड टू गो टू सिटी फॉर सम ग्राफ stuff like that. So उस दौरान मेरे पास इंटरनेट का पैकेज नहीं था ना ही मैंने किसी से पूछा आई वाज रियली बिजी विद स्टफ
उससे पहले का ये सीन था कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। श्रीलंका के बैटर्स ने अच्छा कॉशियस स्टार्ट लिया, बट दे वर पॉजिटिव विद देयर अप्रोच। लाइक ओवर एग्रेसिव नहीं गए, कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहे, गैप्स में शॉट निकालते रहे। कुशल प्रेरा एरियल शॉट हमेशा खेलता है, एरियल एज वेल। कमिंस का पहला पहला अच्छा था, स्टार्क वाज रियली ऑफ इट। उसकी स्पेस उतनी नहीं जा रही थी, एंड आई एम डुबियस ओवर हिज फिटनेस। शाहिन शाह का तो हमें पता है उसकी फिटनेस पूरी अच्छी नहीं चल, ठीक है, दैट इज लाइक अब ओपन सीक्रेट है। मिचेल स्टार्क पे मैंने रिजर्वेशन शो की थी वर्ल्ड कप से पहले के हाउ विल हिज फिटनेस को। आज लग रहा था प्रॉपर्ली ऑस्ट्रेलिया का, मैं आज पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में खेलते देखा। हिज फिटनेस वाज नॉट फुल अप टू द मार्क बिकॉज उसका एक्शन ही पूरा नहीं हो रहा था। उसमें दो इंटरेस्टिंग बातें ये भी हुई कि लाइक उसने दो दफा वो मैन कैट करने की भी कोशिश की, दो दफा वार की। वो एक लाइक एक टॉकिंग पॉइंट बन रहा था कि पहली दफा तो वो आउट कर भी देता तो कोई मुश्किल नहीं थी, लाइक मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि अब टेक्निकली एक्सेप्टेड हो गया। बट ये चीज वो शेयर कर रहा था कि लाइक अगर आप पहले दूसरे ओवर में आप ये चीजें करने पे आ गए, यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, और मेंटली आप डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप अपनी बॉडी पे इतना टच नहीं करें। बट एनीवे, प्रॉप्स टू देयर ओपनर, 100 का स्टैंड लगाते हैं, येट अनदर 100 स्टैंड फॉर श्रीलंकन बैटर्स। बट देन बट देन कैप्टन है पैट कमिंस, ही हैड टू स्टैंप हिज अथॉरिटी उन पे। लाइक आई मीन some rumors were there कि कैप्टन हिमसेल्फ अपने आप को ड्रॉप करने लगे इस मैच से पहले, बिकॉज एक तो ऑडियंस इतनी नहीं खेली हुई पिछले 2 सालों से, और जो खेली है उसमें बहुत बुरा आ रहे हैं। आप इंडिया से आ रहे हैं, लास्ट मैच इतने अच्छे नहीं गए, पहले 2 मैचेस पैट कमिंस की भी बहुत अच्छी नहीं गए। तो बट देन ही मेड एन इंस्टेंट इम्पैक्ट, दो प्लेयर ओपनर्स दोनों को उड़ाए, एंड चेंजिंग मोमेंट जो था वो डेविड वार्नर का कैच था, लॉन्ग ऑन पे डाइविंग कैच था। फ्रॉम देन ऑन ऑस्ट्रेलिया नेवर लुक्ड बैक। और आगे आते हैं उसामा को, जो उसके बाद लाइक वैसे तो मैंने पहले 2 ओवर भी नहीं देखे बिकॉज आई वेंट आफ्टर द सिटी। हाउ डिड यू सी द ड्रामेटिक लैप्स? हमारे टाइटल में भी लिखा है श्रीलंका का ड्रामेटिक लैप्स। It was pretty much along the lines of जो पाकिस्तान के साथ हुआ, हम लाइक इंडिया के साथ हम ड्रामेटिकली कोलैप्स करके, हमारे एशियन भाई श्रीलंका ने भी वही स्टोरी रिपीट की। तो हाउ डू यू सी द इमर्जेंस ऑफ एडम जैम्पा फाइनली गेटिंग इनटू दैट? हमने बैश किया था प्रीव्यू शो में, बट हाउ डू यू सी श्रीलंका ड्रामेटिक कोलैप्स और एडम जैम्पा के बॉलिंग को आप कैसे? Yeah, Adam Zampa was pretty much. He was bowling very horribly, and he was struggling to find his form. However, brilliant fielding from David Warner. Of course, that catch back there at the boundary really helped Zampa to get some morale. But you could see in the post-match ceremony that Zampa wasn't really happy with the performance. Zampa wasn't happy with his performance, and I wouldn't say he is back from. I'm solely judging based on his own perceptions about himself. Like Adam Zampa himself is not very confident right now. Yes, he took wickets today. Yes, and part of that is Sri Lanka collapsing. Well, and a part of that can also be support he was getting from Glenn Maxwell and Mr. Stark. However, Adam Zampa still needs to get better. He still needs to get better. He's still not there yet. क्योंकि एज अ प्लेयर अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो what can we really say about him? Adam Zampa changes kar raha hai. He bowled slower today, and that's why he's getting a bit more help from the pitch. But this pitch was a spinner's track to begin with, so I can't really say that Zampa did something out of the ordinary today to Yeah. claim like okay Zampa is back in the game. Like you get what I'm trying to say. You catch my drift. Yeah, or I won't be getting stretching it longer. Preview scene में मैंने mention किया था एरन फिंच का interview. He has mentioned कि एडम जैम्पा निकल्स कैरी कर रहा है इंडिया वाली सीरीज में भी, वार्म वाली सीरीज में भी। और उसने मेंशन किया था कि ही वाज द मोस्ट इन द नेट्स,
और मैच डे पे भी जब तक वो उसने स्पेसिफिक कोटा मेंशन किया कि इतनी बॉल्स मैंने नेट्स में ना की हो तो आई एम नॉट कंसिडर टू बॉल थ्रू द 10 ओवर्स बट चार विकेट क्रूशल चार विकेट पिक किए ऑस्ट्रेलिया ने विद देम बिग टाइम और मिडिल ओवर में आके की where they needed the most के श्रीलंका की टीम को fully like under the siege कर दें मिचेल स्टार्क का जो आखिरी स्पेल था एक जाकर उन्होंने मारा ट्रेड मार्क जाकर मारा टू क्लैम द नाइन्थ विकेट आई थिंक इट वाज थिक्शाना और एंड पे लाहिरो कुमारा के जो विकेट उन्होंने लिए इट वाज लाइक बॉन्सर और वो जैसे टेल एंडर्स आउट होते थे टॉप एंड पे but there are some viewers with us right now जो can interact with us get your thoughts in the chat box also एक live chat में एक thoughts in अभी तो 50-50 चल रहा है but we need to have bigger sampler size to analyze कि Australia back to their fully best yes or no उसामा I think so ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को कवर कर चुके हैं in a way डेविड वार्नर सेट द टोन और उसके बाद I don't think Manali से भी कैच अप किया था कि have Australia misfielded and another thing जब कैच पे छोड़ा Ali ने mention किया कि no they didn't slip any field any overthrow कुछ भी ऐसा नहीं हुआ so vast improvement और ये पहली चीज थी जो ऑस्ट्रेलिया को दिखाने थी कि यार we are up for the fight so yeah I think so Sri Lanka would be really disappointed at the halfway stage क्योंकि considering आपके दोनों ओपनर सेट आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ गोइंग फ्लैट उसके बाद आपका बनता नहीं कि 210 पे आउट हो लाइक इवन उनकी जो आखिरी पार्टनरशिप लगी दैट वाज 20 प्लस रन वरना हमारे वाले स्कोर पे आउट हो जाना so 210 Migrish total Usama you had predicted कि 250 के अंदर ठक हो जाएंगे तो kudos to you to predicting it right I was really wrong Sri Lanka you disappointed me but क्या किया जा सकता है so half पे मार्क Usama ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ और और उसामा बहुत खुश था मुझे चिढ़ा रहा था ये वो ट्वीट पे की उसामा ने but anyway it was really fair तो समा इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं very shortly before we go into the details of second innings halfway down the innings did you give Sri Lanka any chance कि यार 210 का टोटल है ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी बैटिंग हाँ बोलो समा I lost your voice. So yeah यहाँ okay Usama यहाँ बारिश हो रही है यहाँ बारिश हो रही है ठीक है हाँ okay I couldn't get your voice bro let it oh okay I now hear me out Usama I was about to ask कि जो हाफ पे टाइम था like first innings के break में Usama can you hear me out yeah I'm hearing you ओके मैं पूछ रहा था कि जो हाफ पे मार्क था फर्स्ट इनिंग ब्रेक हुई 211 का टोटल मिला श्रीलंका को कुछ होप देने लगे थे आप कुछ चांस देने लगे थे या 100-0 टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कुछ रिजर्वेशन थी जो अभी हम डिस्कस करेंगे this was not a total where you could get comfortable as a bowling side defending 210 in an ODI match, especially on such batting friendly tracks. I mean, you could build a case that it was a two-paced pitch, and it is one of the only bowling tracks in this entire World Cup. I mean, the next one is in Himachal Pradesh, Dharamsala. That one is also a very spinner friendly track, to be very honest. So मैं यही कह रहा हूँ कि you couldn't be confident defending such a total, even if Australia is struggling with its batting. And just as I said in the match preview, I said we were going to see some runs from Mitchell Marsh and Marnus Labuschagne. That again happened. So मुझे कुछ और भी शायद मांग लेना चाहिए था पाकिस्तान का जितना मांग लेना चाहिए शायद कबूलियत का वक्त था ठीक है तो कुछ बहुत कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा प्लीज
हाँ, तो यार फर्स्टली वो इनिशियल ओवर्स मैंने देखे नहीं, बट वंडरफुल बॉलिंग फॉर्म दिशा मजून का। उसने इनिशियली एक ऐसा बूस्ट दिया था श्रीलंका को कि हाँ वो लोग थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस में आ रहे थे, बट लबुशेन एंड मिचेल मार्श ने शुरू से इंटेंट के साथ आया था कि यार उसने आज छोड़ना नहीं है, एंड देन लॉर्ड जॉश इंग्लिश फाइनली स्कोर्ड सम रन्स, putting some run on the board Yeah. for him, for the team, and justifying his place in the squad. So, but still, we have to Mm. see him performing against bigger sides, against better sides. To be honest, so I'll reserve from making any comment on George English. Baki Yeah. Mahesh Theekshana was a disappointment. उस पे तुम बात करो. Mm. जा ओके दिलशान मडुशंका और महेश दीक्षाना के साथ वो स्टार्ट लेते हैं श्रीलंकन लाइक उन्होंने ओपनिंग जो जे खिलाया एंड आई वाज रियली डिलाइटेड टू सी कि यार जो उनके बेस्ट बॉलर्स हैं फास्ट बॉलिंग वाइज और स्पिन वाइज उन्होंने बहुत सारे उन्होंने पता था कि यार 30 ओवर्स की गेम में आउट करके तो आउट करके वरना चेज हो जाना सो इट वाज हार्टनिंग टू सी अप्रोच उनकी अच्छी लगी. But as you mentioned, Mitchell Marsh, उसके रन में एक ही चीज थी कि यार चेस ब्रेक करके जानी है लाइक इवन लाइक बेसबॉल में मैंने 35 करके जाना मैं आउट हो गया तो हो गया मैंने ऊपर से अच्छा स्टार्ट देना ये नहीं कि दोनों साइड से रट हो जाए क्योंकि वार्नर की फॉर्म ऐसा नहीं लगी हुई थी. वार्नर का एक जो आउट था वो जरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना आई थिंक सो बिकॉज इनिशियली जब ऑफ कोर्स वो एलबीडब्ल्यू ट्रैप्ड आउट हुआ बट इनिशियली ऐसे लगा कि बॉल स्लाइड डाउन हो जाएगी और लेग वाली विकेट मिस करेगी. हमें भी ऐसा लगा बट अंपायर ने काफी देर के बाद उंगली खड़ी की जोएल विल्सन वेस्ट इंडीज के जो अंपायर है डेविड वार्नर ने जाके फौरन रिव्यू लिया डेविड वार्नर ने जाके फौरन रिव्यू लिया और जब काफी देर के बाद फाइनल कॉल आई वो आई अंपायर कॉल बाय फ्यू मिलीमीटर अंपायर कॉल लाइक विकेट क्विट कर रही थी एंड डेविड वार्नर ने फौरन उधर रिएक्शन शो किए जोएल विल्सन की तरफ लाइक कुछ गालियां भी निकालेंगे एंड व्हाट नॉट. सो आई थिंक सो ही माइट बी रिप्रीमेंटेड. अब मुझे नहीं पता कि आईसीसी कौन सा इसके ऊपर स्टेज लगाती है उनके कोड ऑफ कंडक्ट की किस स्टेज के लाइक वायलेशन हुई है. ही कैन बी बैंड फ्रॉम द नेक्स्ट मैच वरना अगर उन्होंने कुछ सेफ पैसेज देना हुआ डेविड वार्नर ने सर्विस पूरी कर ली तो मैच फेस होगी बट दैट वाज टॉकिंग पॉइंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले मैच में भी नाइंसाफियां हुई थी डीआरएस वाले मामले में. आई थिंक सो इट वाज ट्राइनिस जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ. सो अगेन इट वाज फ्लैशबैक मोमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया कि यार अगेन अर्ली ऑन हमारे विकेट्स गिर रही हैं और हमारे खिलाफ कुछ अंपायर हो रहे हैं. फिर दिलशान मडुशन का एक ही ओवर में 2 विकेट लेता है स्टीव स्मिथ को बहुत बहुत जबरदस्त बॉल करवाता है एंड दैट वाज द मोमेंट के कुछ लगा कि यार मैच में कुछ थ्रिल आने लगा है बट मिचेल मार्श ने कहा नहीं 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 आई एम नॉट लेटिंग इट गो. चाहे 2 विकेट गिर गई दमो अगले ओवर की पहली बॉल उसने फेस की क्योंकि पिछले पिछले 2 ओवर लाइक पिछला ओवर जो दिलशान मडुशन का था जिसमें 2 विकेट गिरी वो तमाम दूसरे बैटर्स ने फेस किया. मिचेल मार्श ने उसी ओवर में 3 चौके मारे 2 लाइक एरियल शॉट्स मारना 2 विकेट गिरे हैं. इट टेक्स सम balls टू डू दैट राइट. सो एक पुल भी मारा मुझे उसका पुल शॉट बहुत अच्छा पसंद है. वी आस्क्ड जेरेड टिम्बर एज वेल कि पुल शॉट ऑफ रोहित शर्मा वर्सेस मिचेल मार्श. आई थिंक सो रोहित शर्मा इज द गॉड फादर ऑफ इट और अगर कोई नया चाइल्ड है इसके हवाले से पुल शॉट के हवाले से दैट इज मिचेल मार्श. बट एनीवे मूविंग फॉरवर्ड एक तीसरा आउट भी होता है अंपायर आउट देता है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया रिव्यू करती है एंड दैट केम एज नॉट आउट वो था लबुशेन का. उसके बाद श्रीलंका लाइक रैन आउट ऑफ द फ्यूल क्योंकि दिलशान मडुशंका के 4-5 ओवर हो चुके एंड यू मेंशन महेश दीक्षाना का यार देख लो एशिया कप में भी फाइनल में तो जाके खैर उसे इंजरी हो गई फाइनल से एक मैच पहले राइट बट उसकी आप केपीएस देखो वो राउंड अबाउट 88 टू 90 उसकी एवरेज होती है. On that sort of pitches, he had to moderate the pace. अभी Zampa से वो एग्जांपल दे सकता था. मैंने एशिया का में भी बात की थी. He needs to work on his pace, like of शादाब खान. इतनी हाई स्पीड पे आप
reps जितनी मर्जी करा लो, it is only getting to make the things easier for the batters. क्योंकि आप स्पिन करवा रहे हो, बॉल बैटर तक पहुंचने ना दो। बैटर आजकल जो होता है कि बैट पे चलती लगे बॉल, डिसीव ना हो, आगे बढ़ के भी खेले थे, आप मजीद स्लो करो। सो आई थिंक सो इफ ही जस्ट मॉडरेट्स हिज पेस ही विल गेट द विकेट, बट आज उसकी डिसअपॉइंटमेंट थी। So on this point, viewers, let us know how would you rate Mahesh Dikshana. उसकी राइज अच्छी हुई थी, but एशिया कप इतना अच्छा नहीं गया। World Cup is not going that much well as well. So where do you see him going? People say rate करने लगे थे Ajanta Mendes along the lines of that. So where do you see his trajectory? Do let us know your thoughts in the comment box. उसके बाद Lord Josh Inglis. You gave him the title. I am just borrowing it from you. So yeah, Josh English की मैंने एक ही tactical mistake analyze की थी, that was in deepers. श्रीलंका ने इतने नहीं ट्राई किए, और लहिरो कुमारा, I mean लहिरो कुमारा को आज डाला था, he really didn't inspire. आते साथ विट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी, इवन जॉश इंग्लिश को भी। मिचेल मार्श वाज रियली इनटू द ग्रुप, और जब वो मिचेल मार्श 50 बना के आउट हो गए, 37 बॉल्स 50, तब लेबुल चेन का हमने मेंशन ये किया था। लेबुल चेन या स्टीवन स्मिथ की जैसी भी चेज आई, दे विल नीड वन ऑफ देम कि वो पूरी इनिंग्स लेके चले। तो या वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था लेबुल चेन, और तब तक विला लागे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज्यादा, मैं दीक्षाना से भी ज्यादा, कि विला लागे ने तंग करेगा इन दो बैटर्स को। विरालागे ने एक हद तक बट अच्छी बॉलिंग की भी है। हाँ, विला लागे ने अच्छी बॉलिंग की, बट उसे वो बाइट नहीं मिल रही थी, वो परचेज उसे नहीं मिली। आ जाता है एक आधा बुरा दिन, आ जाता है। इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं थी, बट विकेट टेकिंग बॉल्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी, सो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक लो पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया ने ओवरऑल अच्छा टैकल किया, लाइक लबुशेन के मुझे दो से शॉट भी याद पड़े, एक पे ट्रिपल बना, एक पे चौका बना। सो ही रियली caught him off the guard. So श्रीलंका, आई मीन एक पॉइंट पे तो वो लाइक दे गेव अप, लाइक 100 पे 3 आउट हो गए। एंड क्रेडिट वेयर ड्यू कि जब लबुशेन आउट हुआ, दे सेंट क्या कहते हैं मैक्सवेल, और मैक्सवेल का वैसे हमें पता है नेचुरली वो तेज खेलता है, बट आई थिंक सो दे गेव हिम द ऑर्डर, लाइक उस टाइम 60 रन रहते थे, और आखिरी 60 रन उन्होंने भी 5.3 ओवर्स में अप किए। सो दे न्यू कि यार एंड पे जाके रन रेट के ऊपर कोई ना कोई टीम अंदर या बाहर होगी, उनका वैसे भी बुरा चल रहा था। तो ये अच्छी रिकवरी की मैक्सवेल में। आई मीन कोई I am not sure of his exact score, but I am pretty much sure कि 19 balls पे कोई 35 स्कोर किया। तो मैक्सवेल गेटिंग इनटू द ग्रुप, और वो जो अथॉरिटी शो की ऑस्ट्रेलिया ने कि यार हम गिरे हुए थे, तब आप फुली लाइक हमें फ्लैट कर देते हैं, हमें लेक्चर मारते या कुछ, बट अब आपने हमें राइज करने का मौका दे दिया, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। दैट वाज अ like sign of old Australia, so that was positive for Australia. So but anyway, Usama, I think so it is about the time to hit our viewers with a surprise thing. And yeah, we are delighted to reveal that we will be having Sri Lankan writer, Sri Lankan podcaster with us tomorrow, SL Vasudevan. You might have seen him over जेरड किम्बर शो, जेरड किम्बर की जो पॉडकास्ट होती है फुटमार्क, उस पे वो फीचर कर चुकी हैं। वी विल बी हैविंग हर थॉट्स ओवर श्रीलंका की जो वर्ल्ड कप की जर्नी है, हाउ दे कैन फिक्स देयर इश्यूज। So do look out for that episode. So Sama, final few thoughts on the match itself, and yeah, as I have revealed कि कल हमारा मैच होने लगा है, like कल हमारा अच्छा शो होने लगा है with Astel Vasudevan. So over to you, Sam. Yeah, sure. It's excited about the Estelle show, and बाकी ये है कि यार श्रीलंका was such a good side, and I think वो भी उसी same problem से गुजरे हैं जिससे हम गुजरे थे after the retirement of Misbah, Yunus, and all those other players. So that still hurts them, I guess. बाकी ये है कि
एक पार्टनरशिप है जिसको अभी तक क्या कहते हैं ज़्यादा लोगों ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि मिचेल मार्श काफ़ी ज़्यादा तेज़ खेल गया था। जॉश इंग्लिश ऑफ कोर्स ही प्लेड वेल, और मैक्सवेल के छक्के चौके देख लिए, और जिस तरह आखिर में स्टॉइनस ने छक्के पे मैच को एंड किया स्टाइल्स के साथ। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन मार्नस लबुशेन एंड आई गेस who's that other guy? इंग्लिश का Mitchell Marsh. इंग्लिश Mitchell Marsh and Marnus Labuschagne, I guess they both had a partnership of 77 runs. या इंग्लिश था उस I टाइम जोश English था जोश इंग्लिश था हाँ मार्च that पहले था partnership. उधर I guess that. या Okay. Marsh and Labuschagne had a partnership of 50, while English and Labuschagne had a partnership of like 77 runs, and that stabilized the या entire innings. और अगर तुम या बाकी बाद में भी देख लो कि जब इंग्लिश और मैक्सवेल खेल रहे थे, या बाद में क्या कहते हैं स्टॉइनस आया, तो वो मैच को फिनिश की तरफ लेके जा रहे थे, बट the pair that stabilized the entire innings was Labuschagne and English. So we did this is something that I guess they missed during the India match as well, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टोटल दे नहीं सके थे. So bunch of things still need to be fixed in Australia's squad. बाकी let's see what happens. बाकी इंशाल्लाह कल के शो के अंदर we will examine it a bit more. So yes, over to you, या Ahmed. हाँ हाँ ओके उसामा आई थिंक सो रैप अप की तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया somewhat back for me poll has decided in that way कि ऑस्ट्रेलिया are back to their best. I doubtfully agree but anyway श्रीलंका I think so run for this tournament एक आधा मैच जीत जाए तो जीत जाए of course जीतेंगे न्यूजीलैंड या ऐसी टीमों के खिलाफ but they are pretty much done बस वो मैच पूरे करने लगे लाइक बाकी टीमों के मैच पूरे करवाने तो I mean, श्रीलंका के वैसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऑल आइज आर ऑन ऑस्ट्रेलिया कैन दे कैरी द मोमेंटम हमारा मैच भी अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ सो वी हैव टू प्लान इट आउट हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अच्छे साइन दिखाए बट स्टिल आई फील वी कैन कैच देम अप उन्होंने कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स भी किए हैं कुछ उनका कॉम्बिनेशन अभी भी doesn't sit well to me इसमें मुझे डिस्कशन करेंगे हमारे पास दिन पड़े हैं हमारे पास एक डिटेल प्रीव्यू शो भी हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो में कुछ शेड्यूल है but tomorrow we are going to hit you with special show that is Estelle Devon. She will be joining us for a detailed chat on Sri Lanka viewers to stay tuned for that. And yeah, we are about to sign up. Do let us know your thoughts. Generally on the World Cup, yeah, it's match pe, we would be pretty much intrigued to know your thoughts. Usama, we are pretty much into the one third of the tournament. आपने सेमीफाइनलिस्ट की प्रेडिक्शन की थी वेरी शॉर्टली ब्लंट आंसर सेम प्रेडिक्शन या कोई चेंजिंग आई आपकी प्रेडिक्शन सेमीफाइनलिस्ट को लेकर South Africa comes back into the fold. South Africa comes back into the fold, और yep, Australia का थोड़ा सा, but still you cannot write that prediction off completely because ये सिर्फ 1/3 ही हुआ है. अभी भी बाकी टीम्स ने अपना तीसरा मैच खेलना है, एंड कुछ नहीं कह सकते जब तक ये 5 मैचेस हो नहीं जाते. 5 मैचेस जब हो जाए ना फिर बात करना, जब सबके 5 मैचेस हो जाएं. चलो चलो फिर बात करेंगे ओके आई थिंक सो दैट इज अ परफेक्ट नोट टू साइन इट ऑफ उसामा की आज की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी गई है सो उसामा का मुझे इस प्रेडिक्शन को प्रोटेक्ट करते हुए आई नो योर टैक्टिक्स ब्रो चेस खेल रहे हो मुझे पता है 3D चेस खेल रहे हो या 5D चेस बट एनीवे सो नाइस ऑफ यू फॉर उसामा फॉर जॉइनिंग विद योर थॉट्स एंड इनसाइट्स viewers I am back need your support need your thoughts personally been very down but yeah that is what the fun which keeps us pushing which keeps us driving through so yeah that is the note जहाँ पे हम sign up करने लगे हैं viewers जितने सलामत रहें on your way out of the stream please make sure to hit the like button share कर दें video on your social platforms and subscribe we are on the way to hit a 200 mark please be there please be part of our journey we will be pretty much thankful. Chitra Samat and Allah Hafiz.